So we're continuing the worksheet. Start with question number 2. Given that A is a positive constant, solve the inequality modulus x minus 3a greater than modulus x minus a. So what do we do when we have modulus on both sides of an inequality? Sorry? स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे. Okay, दोनों sides पे square ले लेंगे. So square both sides. So then you can ignore the modulus sign and write whole square at both sides. It's going to be a square minus 2ab plus b square is greater than a square minus 2ab plus b square. So x square and x square conveniently cancels out. So we have 8a square greater than 4ax. I'm going to bring these to the same side. Right, we can cancel a on both sides because we're trying to find the value of x. So a and a gets cancelled and 4 also gets cancelled on both sides. So we have 2a greater than x. Yeah, x is less than 2a. This should be the answer for question 2. Yes, x is less than 2a. Question 3. Question 3 is like question 1 part F. So let's just go ahead and discuss it. Although this is related to log, and I haven't formally taught you log yet. Log is the next chapter that we're going to start from tomorrow, inshallah. But I'll just show you how this is done. So we have modulus on one side of the inequality. So we can just take plus minus by removing the modulus sign. So we have two inequalities, 3x minus 8 less than 0.5 and minus 3x plus 8 is less than 0.5. 3 power x is less than 8.5. And here we have 3 power x is greater than 7.5. Okay. Now, when you have power as a variable, you need to take log on both sides. I'm going to take natural log on both sides. ln 3 power x is less than 8.5 and ln 7.5 is less than ln 3 power x. Just give me a second. मुझे लग रहा है कि I've made a mistake somewhere. Let's see. Okay, x. Then you use a property of log, which is that whatever is the power can come in the base. So x ln 3 is less than 8.5. Now I'm going to divide both sides with 8.5. I'm sorry, divide both sides with ln 3. So 8.5 divided by ln 3 is 7.73. So one of the answers is x is less than 7.7374, in fact, 7.7370. Then, so first you should write the longer version, and then x is less than 7.73. All right, the other side, we have ln 7.5 is less than, x comes down again, we have ln 3, and then we divide both sides with ln 3. So ln 7.5 divided by ln 3. That gives us 1.83. So x is greater than 1.8340. So we're getting x is greater than 1.83 and less than 7.73. Let me check the answer.
are getting this answer. 1.83 and 1.97. मैं आपने ln 8.5 से डिवाइड नहीं किया, आपने सिर्फ 8.5 से किया, इसलिए गलत आंसर आ रहा है आपका. Oh, yes. Well, I did not take ln here. ये बड़ी गलती. This was supposed to be ln. Unfortunate mistake. ln here, ln here. ये miss हुआ. And then ln 8.5 divided by ln 3 is 1.95 after rounding. That is the correct answer. So this would be 1.95. I think now it's correct. Yes. Okay, this took a while. So now let's quickly do question number 4. Again, this is log, which we haven't studied yet. So don't worry if you're not still very confident about this. You're not expected to know this yet. Okay. Rewrite the given equalities using modulus notation. So we have part A. So you should be drawing a number line, 1 till 2, and this is your inequality. So the inequality has been represented on the number line. First thing you need is the midpoint of 1 and 2, which without any working is 1.5. So you can start with x equals 1.5, and then you can bring 1.5 to the other sides, and then place modulus over here. Now the distance from the center to one of the sides is 0.5. And we're going to write x minus 1.5 is less than 0.5. Because we're talking about this region where the distance is never greater than 0.5 between the center and the extreme value. It is never greater than 0.5. The maximum distance is 0.5. Okay, although there's no question in this question number 4 like this, but I want to also, let's call this part A1. I also want to discuss this. What if this were x is greater than equals to 2 and x is less than equals to 1? Then the working would have been exactly the same, but the final answer would be different because now the distance is greater than 0.5. Because we're talking about this region and this region where x is greater than equals to 2 and x is less than equals to 1. So here the minimum distance is 0.5 on either side. So you write x minus 1.5 modulus is greater than 0.5, if that were the question. All right, let's do part B now. Any questions so far? No, ma'am. Okay. Part B, and please let me know if I'm going too fast. So we have, just check this. Okay. So again, we need the mid value of minus 1 and 3. What is that? Minus 1 plus 3 divided by 2. So that would be 1. So the middle value is 1. So you can start with x equals to 1, then x minus 1, then you write modulus. Then you find this distance, which is what? 2 units. So you write less than 2. Because the maximum distance between the midpoint and the value is 3. The extreme value is, sorry, 2. So that's why you write less than 2. Okay, part C. How about you do the remaining two yourself? And once you're done, I'll show you the answers. You have 3 minutes to do both of these. Till 8:30, jaldi se kar.
मैम ये आंसर्स तो बता दें। ये रहे आंसर्स। जी मैम ये ठीक है हैदर, आप कर रहे थे साथ साथ? मैम हो गया। ठीक है, गुड। Question 5. Question 5 is again very easy. Can I ask you to do these questions on your own? सारे नहीं करो। मैम पार्ट सी समझा दे वैसे। See, यस मैम, बस एक कॉन्सेप्ट का मसला। कि जब दोनों साइड पे मॉडुलस हो इक्वालिटी के तो क्या करते हैं? ये नहीं मैम, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका। ओह अच्छा, इसका क्वेश्चन 4। ओके, so let's see what was question number 4. So first you need the mid value of minus 3.8 and 0.001. So I'm going to write minus 3.8 plus 0.001 divided by 2. Minus 3.8 plus 0.001 divided by 2 gives negative 1.8995. Yeah, okay. And then I'm going to write x equals negative 1.8995. Is that what you guys get? Did you get this? And then you place modulus around this. एक वैसे 5 missing है, इधर होना चाहिए था. And then you write this mid value is what? Minus 1.8995. And then we need the distance from here to here. So 0.001 minus 1.8995. So that's 1.9005. मैम अगर 3.8 से डिस्टेंस निकालना तो फिर वो कैसे निकालेगी? मेरी नेगेटिव डिस्टेंस आ रही है। तो आप पॉजिटिव ही लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हमेशा। ठीक है मैम, आप समझा गई। तो 1.9005, क्योंकि ओके मॉडुलस मैम। नेगेटिव तो नहीं होता ना, इस वजह से हम पॉजिटिव डिस्टेंस ही लेते जी मैम। हैं। ओके, अच्छा जी। So in part A and B, what do? You remove the modulus and place plus minus with the left hand side. And in part C and D, you remove the modulus sign from both sides and just place plus minus with any one of the sides. Okay, so I'm going to do part D only, and then I'm going to give you guys a few minutes to do part B. Let's just do B and D. So we're going to do D together. So remove modulus and place plus minus on any one side of the inequality, sorry. So we have 5x plus 1 equals 11 minus 2x, and minus 5x minus 1 is equals to 11 minus 2x. So we have 7x equals 10 and x equals 10 by 7. And we have 3x equals minus 12. So x equals minus 4. Okay, and this should be written in mixed form. 1 whole 3 by 7. These are the two answers. Okay, now please do part B. Let's try to finish this today. All the questions of the worksheet. This is the answer. Okay. Okay. Heather, what about you? I'm pretty sure आप कुछ और कर रहे हो। कह रहे हो कि ये तो मेरे लेवल के क्वेश्चंस ही नहीं। हेदर इधर है ही नहीं, और अच्छी बात। जी मैम।
कुछ नहीं कर लिया 5b. जी मैम सारे कर दिए पार्ट. Okay, good. Okay, let's quickly take a look at question 6. Again, this is from log. How do we know? Because the variable is in the power. Let's go ahead and discuss it. So remove the modulus sign. Plus minus 4 minus 2 power x equals 10. We get two equations. 4 minus 2x equals 10. And minus 4 plus 2x equals 10. Okay, so let's make 2x the subject on both sides. 2 power x equals minus 6. And here we have 2x, 2 power x is equals to 14. Okay, since the power is a variable quantity, so that means you have to take log on both sides. So I'm going to take natural log on both sides. Ln minus 6 is equals to ln 2 power x. नेगेटिव Next, आंसर आती है वैसे भी लॉग में. hmm? अगर नेगेटिव नंबर के लॉग में मैम आंसर नहीं आता. नहीं आता, math error, exactly. So next you use property of log where this power can be written with the base ln2. X ln2 is equals to L minus 6. And if you try solving this in your calculator, you'll get no solution. So you can even write no solution over here. You don't need to do any further working क्योंकि आपने mentally कर लिया कि इधर तो negative value का log ले आ जा रहा है, which is not possible. Another way of understanding this is if you remember from IGCSE or we even did in AS के भी syllabus में exponential के graph की shape आनी चाहिए आपको. So if you draw the shape of y is equals to 2x, तो वो इस तरह होती है. एक्स एक्सेस उसका एसिम्प्टोट होता था और यूं करके शूट करती थी. And this was 1 because 2 power 0 is 1. Now, can this graph ever be -6? No, it can't be. -6 तो यहाँ वैल्यू है. इसको तो ग्राफ कट ही नहीं करता, यहाँ से तो गुजरता ही नहीं है ग्राफ. So there's no value of x which will give you a -6 answer for y. So y की वैल्यू कभी -6 हो ही नहीं सकती x की किसी भी वैल्यू के लिए. So that is why log can never be negative. Log of minus x is not possible. This is what I meant. Okay, now take a look at the positive side. Again, we take log on both sides. I'm going to do two steps together. X ln 2 is equals to ln 14, and then x equals ln 14 divided by ln 2. ln 14 divided by ln 2 is 3.80735. Write a long answer first before you round it off to three significant figures. So 3.81. Question number 6, the answer is 3.81. Okay. Moving on. Any questions in question 6? Jaldi jaldi No. करते हैं. 7. How many questions are there in this worksheet? 13 हो जाएंगे इंशाल्लाह. Sketch the graph of modulus of x minus 2. So if you remember from our first lesson, yeah, second lesson, that what transformation takes place here? The graph for y is equals to modulus of x looks like this. How does this graph transforms when it is y is equals to modulus x minus 2? 2 left. Minus की तरफ नहीं, positive side पे, 2 right. Oh, हाँ sir. X minus 2 is equals to 0 and then x is equals to 2. So it's actually going 2 places to the right. Okay, so it becomes like this. And when you're sketching a graph, you must show the coordinates of the intercept. So x intercept is 2, y intercept हमने find करना है. Y intercept कैसे find कर सकते हैं? X equals 0. Yes, x equals 0, and when x equals 0, we get y equals modulus 0 minus 2, which is modulus of minus 2, which is just 2. So this is the graph.
Heather, are you there? जी मैम। ओके चलो, अब तो मैंने क्लियर कर दिया। मैंने कोई और चीज इसके साथ पढ़ानी थी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करा देते। ओके, पार्ट बी। We have modulus on one side of the inequality. So in this case, we just remove the remove the modulus and write plus minus with that side. You don't have to square both sides in this case. Although if you do, you will end up with the same answer, but you will be doing a lot of extra steps. So not recommended. Okay, let's solve both these inequalities. I'm taking x to the other side, so 2x minus 4 to the other side, so 2. So x is greater than 1. And we have 4x here and 6 here. So x is greater than 3 by 2. So one answer is x is greater than 1. The other answer is x is greater than 1.5. दोनों greater than आ रहे हैं. How do we check if one solution is right or one solution is wrong? मैम नंबर लाइन बना के देख लीजिए। नंबर लाइन बना के आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉमन रीजन है. So one of the answers is x is greater than 1. So let's say 1 is here and this is what the inequality will look like. The other one is 1.5. It's going to be here and this is what the inequality will look like. This is the common region. ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये सेकेंड इनइक्वालिटी में नहीं है, इधर से लेकर इधर तक. So your answer would just be x is greater than 1.5. What is the other way of checking that which of the solutions is correct and which is? Yes, substitute value in the actual given inequality. So we have to reject this. खाली इसको check कर लेते हैं. So it says x is greater than 1. Take a value slightly greater than 1. For example, x equals 1.1. Now let's substitute it in the actual given inequality. So I'm going to write modulus 1.1 minus 2 less than 3 into 1.1 minus 4. So 1.1 minus 2 is minus 0.9 inside the modulus, less than 3 into 1.1 minus 4 is minus 0.7. So we're getting 0.9 is less than minus 0.7, which is false. So that is why this solution is rejected. मैम जो कॉमन होता है नंबर लाइन है वही चूज करते हैं इस केस में जिसमें दोनों ग्रेटर देन आ रहे हैं या दोनों लेस देन आ रहे हैं, ज्यादातर यस मैम केसेस में तो ऐसे आता है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन. उसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना. फिर भी उनमें भी काफी चांसेस होते हैं कि एक सोल्यूशन सही नहीं है, तो उसके लिए सेकेंड मेथड यूज होता है कि टेक अ वैल्यू इन दैट रीजन एंड देन सब्स्टिट्यूट इट बैक इन द गिवन इनइक्वालिटी and see if the final inequality is true or false. If it's true, that is your final answer, and if it's wrong, so you reject that particular inequality. But अगर दोनों greater than है और दोनों less than है जैसे इस क्वेश्चन में है, तो आप ज्यादा आसानी से नंबर लाइन से बता सकते. Okay, question 8. Sketch 5x minus 3 minus 2. Okay, what transformation is taking place here? पहले तो मुझे x का turning point बता दे. 3 और 5 Yes, you equate the modulus, the value inside the modulus, the expression inside the modulus to 0. So you get x equals to 3 over 2. So x-intercept of the turning point is 3 by 2. That is 1.5. What about the y value? 5 होगा 3 by 5, sorry. 3 by 5, which is 0.6. So x coordinate of the turning point is 0.6. What about the y coordinate of the turning point? -3 नहीं, इसमें क्या होता था? y equals x minus 2 whole square plus 3. अगर हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएं
तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? -2 का मतलब है 2 यूनिट्स गया है राइट, यहाँ पे आ गया। और +3 का क्या मतलब होता था? +3 would take this graph 3 units up, यहाँ आ गया, तो यूं बन जाता था। तो आपका टर्निंग पॉइंट हो गया 2,3। तो इस केस में टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 means this graph is going to go 2 units down. फिर ये नहीं समझ आ रहा ना, मैं दोबारा समझाती हूँ। Let me show you all the transformation. So the basic graph is y is equals to modulus of x, which looks like this. ठीक है ना? अब इसको कर लिया y equals modulus 5x minus 3. So equate this to 0 and we get 3 by 5. So this graph goes 0.6 units to the right. So it's here. And then when you write y equals modulus 5x minus 3 minus 2, then the same graph goes 2 units down as well. So the turning point is 0.6 comma minus 2. This is the turning point. And this is what the sketch would look like. ठीक है मैम। Heather, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ आ गया -2। अब मुझे इंटरसेप्ट्स का ख्याल रखना है। तो कुछ क्वेश्चन में कहा शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यू हैव टू indicate the x-intercept and the y-intercept. Let's find the y-intercept first. For y-intercept, you have to substitute x is equals to 0. So y equals modulus 5 times 0 minus 3 minus 2. Y equals 3 minus 2 is equals to 1. So we have this and we have this. However, something is still missing from the graph. क्या missing है? इस intercept की value और इस intercept की value, x-intercept, because the question clearly says showing the coordinates of the point where the graph meets the coordinate axis. x-intercept के लिए what do? We equate y to 0. So let's quickly equate y to 0. 0 equals modulus 5x minus 3 minus 2. 2 can go to the other side. 5x minus 3. Then you know what to do. Place plus minus instead of modulus symbol. And then solve these two. एक में आंसर आ रहा है 1 और एक में आंसर आ रहा है तो -2 कर लेते हैं 5x minus 3, फिर यहाँ आ गया 1 by 5, which is 1 by 5 क्या होता है 0.2. So one value is 0.2 and the other value is 1. If you don't show the x-intercepts or the y-intercept, you don't get full marks for this question. And ideally, you should also show x and y. पता नहीं होता आपके कब marks कट जाएंगे y. At least x and y on one side. Okay. Next question. I'm sure you don't have the worksheet printed, so best you can do is roughly sketch the grid after plotting the graph. पहले graph plot कर दो, फिर उसके around grid बना दो. So tell me what's going to be the x-intercept of the turning point. 2. 6, let's see, minus 3x equals to 0. So x is equals to 2, that is correct. And there's no value being added or subtracted outside of the modulus function. So the turning point is going to be 2, 0. Okay, now let's find the y coordinate of y-intercept. So for that, we equate x to 0. That gives us a 6.
यहाँ पे आ गया and then you make a line like this and remember this is a very symmetrical graph तो अपनी मर्जी से यूं नहीं बना देना, ये बिल्कुल गलत हो गया। कैसे बनाना है, यहाँ से देख लेते हैं, इधर से इधर तक 2 यूनिट्स का डिफरेंस है तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स का डिफरेंस 4,6 भी आएगा and then you join it like this. All right. Yes, ma'am. अच्छा हैदर, are you there? यस मैम। अच्छा, एक चीज मैंने समझानी है, वो आगे यूज होगा, ऑल्दो ये मैं पहले बता चुकी हूँ। लेट्स से आपने स्क्रैच से इसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x का मॉडुलस के बगैर, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x। ठीक है, तो इसमें हम, मिरर इमेज हो जाएगा नेगेटिव का। हाँ एग्जैक्टली, मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसको टेबल मेथड बना करते हैं यूज। सो जब x 0 है तो y 6 है, और जब y 0 है तो x 2 है, तो 0,6 इधर आ गया और 2,0 इधर आ गया, तो ये यूं बन रहा है ग्राफ। लेकिन क्योंकि ये मॉडुलस है तो ये जो नेगेटिव वाली साइड है ये ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो बाकी यूं हो जाएगा। इस तरह से एक्चुअली ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन जहन में होनी चाहिए फॉर वन ऑफ द अपकमिंग क्वेश्चंस, वी डिस्कस दैट शॉर्टली। एनीवे, नाउ लेट्स क्विकली डू पार्ट 2। पार्ट 2 खुद कर लोगे, प्लस माइनस करना है बस, और फिर इसको सॉल्व करना है आगे चल। So we're going to finish this as homework 9 part 2. Okay, let's quickly do question 10. Okay. Again, you'll do part 2 of this on your own. So इसको बस sketch करके देख लेते हैं। Y equals modulus 2x minus 5. So turning point is going to be 5 upon 2 by equating this to 0. When you equate 2x minus 5 to 0, you get x equals 5 over 2, comma, since there's nothing being added to it, so comma 0. This is the turning point, 2.5, comma 0, which is going to be here. And now let's find the y-intercept of this function. So for that, you equate x to 0, which gives modulus of minus 5, which gives 5. तो अब ये सिमेट्रिकल है तो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे 2.5 पे ये हाइट आई है 5, तो फिर 2.5 फर्दर आगे ये हाइट आएगी, इधर आएगी। सो एग्जैक्टली यहाँ पे एक डॉट बना के यूं करना है। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर और नीचे हो गया तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स एग्जैक्टली इस चीज के मिलेंगे कि दिल चेक दिस, दिल चेक दिस एंड दिल चेक दिस। ठीक है, पार्ट 2 इसका खुद करोगे। क्वेश्चन 11। Okay, 11 is regarding what we just discussed. Heather, are you on 11? I'm 13 पे हूँ। Okay, chalo, ठीक है। The diagram shows the graph of modulus of fx passing through 0,4 and touching the x-axis at 2,0. Given that the graph of y is equals to fx is a straight line, write down two possible expressions for fx. So वो कह रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं fx के जिनका मॉड्यूलस का ग्राफ हमें नजर आ रहा है। दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका मॉड्यूलस लें तो ये गिवन ग्राफ बन जाएगा। तो वो दो फंक्शंस क्या हैं? सो एक तो ये केस है वेयर देयर इज अ लाइन गोइंग लाइक दिस, और जब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे तो वो यूं रिफ्लेक्ट होके यूं हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये केस है। सो लेट्स डू दिस वन फर्स्ट। सो फॉर दिस लाइन
we can take the slope is हमें y is equals to mx plus c की फॉर्म में चाहिए इक्वेशन इसकी. So m के लिए let's take rise over run over here. 4 is the rise and 2 is the run. However, it's a falling line, so you must remember the rising line ऐसी होती है, falling line ऐसी होती है. So it's going to be a negative slope. So m is -2. So y equals m, which is -2 x, and c is the y-intercept, which is 4 in this case. So +4. This is one value of fx, one possible case for fx. ठीक है मैम. ठीक है, अब सेकंड देखते हैं. सेकंड के लिए ऐसी लाइन होगी, ये नीचे आ रही थी यहां से और ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली गई. सो फॉर दिस विल बी -4. ये यहाँ आया हुआ है ना, तो -4 है. सो नाउ द स्लोप इज पॉजिटिव. इफ यू टेक राइज ओवर रन अगेन, you'll get 2 again, but this time +2 and 2x, and this time the y-intercept, the c, is -4. So y is equals to 2x -4, or fx equals to 2x -4. These two are the possible equations जिनके मॉडुलस का ग्राफ ये हो. ठीक है, I'm going to end the link here, and I'm going to send you a new link then. चलो, see you. इधर आपने लास्ट क्वेश्चन कर लिया पूरा? जी मैम. अच्छा, उसके आंसर्स मैंने कुछ फिक्स किए थे. मेरे ख्याल में आपकी वर्कशीट पुरानी थी, उसमें नहीं, जो मैंने पहले शेयर की थी उसमें नहीं फिक्स थे, तो यहाँ से आंसर करेक्ट कर लो. आई थिंक लास्ट वाले की इनइक्वालिटी उसमें स्वैप हुई है, और एक इसमें और स्वैप हुई थी बस, वो उसमें भी. लेके नेगेटिव बार हाँ, में लिखा हुआ. बस ठीक है. ओके, आज हमने यही करना है 12 1 13. तो अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आपने जाना है तो चले जाओ, वरना रहना है तो इट्स फाइन. ठीक ओके, है मैम, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. Draw the graph for fx modulus 2 minus x for this domain and state the range. ओके, तो पहले हम जनरल सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं 2 minus x का, और फिर उस डोमेन को देखते हैं. फिलहाल we're only worried about this. So what is going to be the x-intercept of the turning point? -2. नहीं, 2 minus x is equals to 0. So 2 is equals to x. +2. Comma, since there's nothing being added here, so +0, comma 0. That is the turning point. So 2, 0 is the turning point. That means it's somewhere over here. 2. And this is what a rough sketch would look like. इस तरह का. ठीक है, और y-intercept भी देख लेते हैं इसका. Although हाँ, कहाँ है draw the graph for the domain. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक. तो अब let's see कि यहाँ पे -1 पे क्या वैल्यू है, और यहाँ पे 3 पे क्या वैल्यू है. So let's find the value of the function at -1 and the value of the function at 3. So at -1 we have 2 minus -1, which is 3. So at -1 the value is 3. यहाँ पे 3 है. So you end the graph here. इससे beyond नहीं जाएगा, मिटा लेना है बाकी. Or 3 पे, when x is 3, we have 2 minus 3, which gives modulus of -1, which is just 1. So at 3 we have 1. So you end at 1, and then you don't draw the rest of it. वो हटा देना. So बस इतना ग्राफ बनेगा. ठीक है मैम. यहाँ से चलिए, रेंज भी पूछिए. तो अब इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू 0 है. The range is from here till here. Maximum value of y is 3. Minimum value of y is 0. अब 3 जब आई है तो किस वैल्यू के लिए आई है? x -1 जब था, तो हमारे पास 3 आंसर आया. क्या -1 डोमेन का पार्ट था? नहीं, -1 डोमेन का पार्ट नहीं था. So we don't write equals to with 3. Now let's check 0.
जब हमारे पास 0 y की वैल्यू है तो वो तब आई थी जब x2 है, और x2 है डोमेन का पार्ट. सो यू राइट इक्वल्स टू विद दिस. ठीक है, ओके. सही है. So question number 3 is exactly identical. I'll do just 2 questions with you. ठीक है, बाकी आप कर लें. ठीक. ये कॉपी हो गया तो बताना. कर लिए ना. Okay, let's do नेगेटिव वाला एक बना लेते हैं, f कर लेते हैं, और ये e कर लेते हैं, e and f. Okay, so let's first draw e roughly without keeping the domain in mind. So the turning point is going to be 3 by equating this to 0. 3 minus x equals to 0 करेंगे, so we get x equals to 3, comma, whatever is being added or subtracted is the y value. So 3 comma 1 is the turning point. Let's plot that. So 3 is here, 1 is here, so here's the turning point, and the graph would go like this. Okay, now the given domain is between -1 and 4. So, sorry, -3 and 4. So when f is -3 and when f is 4, what are the values of the function? 3 minus -3 plus 1. 7 आ रही है मैम. 7. So when x is -3, somewhere over here, y is 7. So यहाँ पे 7. This is not going to be the part of the domain. क्योंकि -3 is not part of the domain. So I should just make a hollow circle. वैसे just for clarity. ये आपकी वर्किंग का पार्ट नहीं है hollow circle. ओके, यहाँ पे ग्राफ एंड कर दिया. उसके बाद f4. f4 is 3 minus 4 plus 1. So -1 का मॉडुलस is 1 plus 1 is 2. So 4 पे वैल्यू आ रही है 2. So when x is 4, we have 2. उसके साथ मैंने डार्क सर्कल बनाया क्योंकि ये डोमेन का पार्ट है. So let's say इधर. So your graph goes from here till here. बाकी पार्ट नहीं बनाना. अभी भी मैंने 4 गलत बनाया थोड़ा. let me fix that. 4 3 के ज्यादा पास होना चाहिए था, keeping the scale in mind. Okay, so 4 will be closer to 3. We have 1 here, 2 here, 3 here, and 4 roughly here. So 4 पे 2 है वैल्यू यहाँ पे कहीं. So this is 2. Really annoying. चलो वो नहीं हट रहा, खैर. And it goes like this. And your solution will go, your actual graph will be from here to here. That's it. बाकी नहीं. Okay. अब domain देख लेते हैं, range देख लेते हैं, sorry. So for the given domain, the maximum value of y is 7. However, that would not be part of the domain. Or range, sorry, or -1 तक. So it's going to be fx is between 1 to 7. लेकिन जो 7 है वो solution का part नहीं होगा. उसके साथ equals to नहीं लिखना, लेकिन 1 होगा. So 1 के साथ equals to लिखना है क्योंकि 1 आया था जब x3 था, और x3 is part of the domain. ठीक है मैम. Now let's do the last part. मैम मुझे समझ आ गया, मैं कर लूंगी बाकी. कर लोगी लास्ट वाला. उसका ग्राफ उल्टा बनेगा, मॉडुलस के बाहर माइनस है. बना लोगी? जी बना लूंगी ना, पूछूंगी तो. ठीक है, यूं करके कुछ बनेगा, ऐसे करके जहाँ पे भी है टर्निंग पॉइंट, बट अपसाइड डाउन. तो मैम मॉड्यूलस के बाहर हो मतलब फिर उसका माइनस हाँ इंक्लूड करते अंदर हो तो. हाँ बिल्कुल. ठीक है, ठीक ठीक. चलो. लेट मी नो टुमारो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ, सेंड मी अ पिक्चर, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सही बनाया नहीं, क्योंकि आंसर्स में तो पिक्चर. ऑलराइट, देन टेक केयर, सी यू टुमारो. ऑफिस में. ऑफिस.